For last 2 days market has been showing a similar pattern. What it does is it opens lower, sharply opens, move around that level for 2-3 hours, make a bounce back and close like little up. Next day morning due to some global Q फिर से नीचे खुलता है और वो वहाँ से फिर रिकवरी दिखाता है. सो और कल भी एग्जैक्टली वैसे कुछ हुआ और सेम टाइम पे हुआ. देखो तो अगर हम देखें तो परसों जो मूवमेंट आया था वही 1:15 के आसपास आया था. ये तकरीबन 12:15 के बाद शुरू हुआ था और कल भी 12:15 के बाद. तो सेम तरह का पैटर्न होता है. और उससे पहले क्या होता है, निफ्टी एक लेवल पर रुक जाता है और वहाँ पे फिर वो 50-60 पॉइंट रेंज में घूमता रहता है. बिफोर दिस रैली कम्स एवरी डे, मार्केट क्या करता है, एक उस टाइम निफ्टी एक नया सा लो एक डिप मारता है और उसके बाद वहाँ से फिर सडनली स्पाइक अप करके ऊपर ले जाता है. दिस इज़ अ पैटर्न. व्हाट इंडिकेट्स इज दैट बिकॉज एवरीबडी राइट नाउ इज़ वेरी रेयरिंग टू गो शॉर्ट ऑन द मार्केट. तो जैसे ही वो शॉर्ट ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, इट बाउंसेस बैक टू ट्रैप दोज वीक बियर्स जो कि नए बाहर निकले पिंजरे से और दे वांट टू अर्न मनी एंड दे वांट टू जस्ट कैपिटलाइज ऑन द कैटिपुलेशन. तो वो लोग इमिडिएटली इसमें आते हैं और उन्हीं को ही मार्केट स्मार्टली ट्रैप करके उनकी पोजीशंस कटवा के शाम तक बाहर जा जाती है. अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी को सही माने तो आज फिर से उसने 200 पॉइंट नीचे खोलना है. नित्य फिर हम अगर 396 से 200 पॉइंट ले तो वापस यहीं पे कहते हैं मार्केट ने स्टार्ट करना है. अगर उन्हें स्टार्ट यहाँ से करना है तो फिर से सेम हो सकता, अब फिर से तो नहीं होगा मोस्ट लाइकली, बट या पॉसिबिलिटी कि बेसिकली वो एक यहाँ पे कहीं खोल के फिर रिकवरी दिखाए. वी डोंट नो. अगेन आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट एनी मूवमेंट राइट नाउ because sometimes it's something very obvious. It doesn't happen that way. But let's analyze things to know what the levels say. So one thing is that this whole area, of around 200 to 250 is where the market is making not willing to give up right now. So this becomes a level where it can again take a support and around the morning and then it recovers from here and maybe this time around try to break this, or finally it gives up on this level and moves further downside. So let's evaluate it just for sake of it. अब मैं ये वाला जो हमारा एक लाइन था इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसका आपको रेलेवेंस नहीं रहा इस डाउनवर्ड लाइन का. So I'm moving that now. Now if you look at this larger picture here, let's see this way. Let's keep it this way, so that we don't lose sight of what's happening where. It changes to the line to this. If you see this clearly, as a layman, if I see, yes, we are seeing a consistent downfall. It recovered, but then again making a downward, right? So this has to be broken. For bulls, if I say so. Otherwise, it is going down. It's quite obvious. It makes the covers go down, recovers goes down, but every time it's making a new low. पहला लो यहाँ था, दूसरा लो, तीसरा लो यहाँ. तो making a low over there. आप में भी ऐसे हो रही है. आप में तो ये लाइन जो है जो ऊपर से आ रही है लाइन क्लियरली दिखा रही है कि हम भी देखेंगे लो हाई एंड लो लोज. इससे बेयरिश स्टैंस के बाद जो अगला हाई बनता है वो पिछले हाई से नीचे बनता है और जो अगला लो बनता है वो पिछले लो से नीचे बन रहा है. सो नाउ टू ब्रेक दिस इवेंचुअली अगर देखें तो फिटिंग आई थिंक एज ए बुल वी हैव टू नाउ सरपास this range of 23,800 on the upside. Otherwise we are going down rapidly. Eventually one day will come and even we'll break this line also and we'll go towards 22,900. So with all this, right now hourly charts say that support lies in the range of range of 23250 if I say so at a broad level. It goes down above below this for some time, but it recovers back. That's the pattern of the last 2 days. So I will say this time is that let's keep that level of 23250, wait for an hour, and then we see if it gets broken, we will go short. This time maybe for target of 22,900 I've been talking about for some time. On the upside, what happened if basically we actually now go above somewhere the previous high, again this
460, if I say this level is around 500. So अगर हम 23,500 के ऊपर जाते हैं किसी भी सूरत हाल में, तो चांसेस है कि इस बार जाके वो रिकवरी आप थोड़ी सॉलिड हो, क्योंकि आप 2 बार ऐसे ले रहे हो, तो आप फिर से अगर रिकवरी आती है तो शायद इस बार वो थोड़ी सॉलिड आए और हम फाइनली विल ट्राई टू ब्रेक फॉर 600 लेवल्स, eventually try to break 23800 levels. So as if I think Nifty from the trading point of view, I should be looking at the level of previous day high, which is around 23500. If this taken out somehow, then I will look at 23600 and then 23800. So what are my levels from hourly chart on the upside is 23500, 23600 and 23800. Downside, my level is 200, to 250. Again, same, thing. If it persists below that, for some time, like an hour or so, we can attempt a short again. And, stop loss is as per your own analysis. I don't want to speculate on that. And then let's wait, if it breaks that level, we should be heading towards 22900. That's what my analysis is on Nifty. On hourly chart, on the daily chart, one thing is very clear, that we are not closing below 23350, and that's is encouraging. Again, I'm removing this particular downward line now. It has no relevance. So yeah, if it's able to close above this and we head again, so here on the daily chart says that we have to close above 23600. So for daily we have a clear window of 23350 से 23600. ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है. 600 अब मेरा हो गया अपर बैंड, 350 हो गया मेरा लोअर बैंड. अब मेरा इनमें से कुछ भी ब्रीच होगा तो वी मे गो टूवर्ड्स दैट साइड टू टेक अ पोजीशन. On the weekly chart, risk is that we are consistently closing below the weekly pivot of 23500. So this has to be somehow protected by end of this week, which is tomorrow. Otherwise, it could be a fall. That's what chart says. So if I summarize everything, we have to know what our key levels are. So on the upside, it is 23500. ये आवली पे इंट्राडे पे है. अगर उसके बाद आगे बढ़ता है और 23600 के ऊपर क्लोजिंग देता है, इट विल बी एक्सट्रीमली बुलिश सिनेरियो. तो फिर वो अगला टाइम मारेगा 23800 पे. ये ऊपर लेवल, नीचे लेवल पे जो है ना, पहला देखना है कि क्या हम 23200 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे इंट्राडे में. दैट्स इम्पॉर्टेंट. और उसके बाद या फिर क्या हमारा क्लोजर जो है वो 23350 के नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा. अगर ये 2 फैक्टर अगर हम एनालाइज कर गए तो दिस विल ट्रिगर द डाउन साइड थिंग. एनी ऑफ दिस, क्या 23200 के नीचे ट्रेड करो कंसिस्टेंटली, या हम 23350 के नीचे क्लोजर दें. सो इन माय व्यू बोथ दिस वुड बी bearish for the Nifty, and eventually it will slip towards 22700 or 2800 levels, or I don't quite a very strong support. Eventually we may go towards 22300 से 22000 के levels पर. So this is my analysis as of now on Nifty. On weekly close, which I have told you is it is at 23500, and we have one more day to cover that up. Let's see how it goes. And yeah, so that's it. Hope you have a good trading day today. Just don't forget the levels. There are a lot of news which we can't understand and decode, so better we look at the levels only, nothing else. Thank you very much. Have a good day.